यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। और कैसे हो? और भाई पिलने वाले हैं आज हम पिलने वाले हैं पक्का। सारे स्ट्रीमर्स स्ट्रीम करने लगे हैं अब तो। आज हम गए भाई, आज हम मर गए भगवान। होल्ड ऑन गाइस, मैं विंडो कैप्चर लगा ही रहा हूँ बस। तो टैब यस प्लस केस एंड इसको इधर मारते हैं। और एक से रुक जाओ, मैं स्पॉटिफाई पे गाना भी चला ही रहा हूँ। फिल करेंगे, फिर ड्रिल करेंगे और फिर बाकी का फिल करेंगे। कौन सा सॉन्ग चल रहा है? क्रिम्सन नाइट का है क्या? अरे भाई अब लगेंगे तो सभी वॉच पार्टी के लिए एकदम बिल्कुल एक्साइटेड है मैं। फाइनली वॉच पार्टी हो रहा है। जेंशन खोल के रखते हैं, ठीक है ना? जेंशन इम्पैक्ट ऑफिशियल, जेंशन इम्पैक्ट ऑफिशियल खोल के रखेंगे। एंड हम खोल के रखेंगे ये चैनल, एक और चैनल जेंशिन का जो जापानीज वाला चैनल है, कुछ भी किसी पे भी स्ट्रीम हो सकता है। कर रहा है क्या विषय? Så går länge nå så blir jeg bare जेंशिन एक ये है, इधर से हम जाएंगे और चैनल्स के अंदर जाएंगे। एक ये, अच्छा ट्विच भी खोल के रखना है, किसी पे भी आ सकता है ना? श्योर, मैंने इसके पहले वाला नहीं देखा। मैं थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ ना। ओ दादा नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। तो ऑफलाइन ये 2.6 वाला स्पेशल प्रोग्राम था। আসছে তুই কত দিবি না মা চলে যাবে মা কোনো হচ্ছে না होल्ड ऑन गाइस। Hola gamer explorer। सेटअप कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये वो ये सेटअप कर रहा हूँ बस।
भाई सारे स्ट्रीमर्स अब स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने तो। लाइव चैट कैसे देखूंगा इधर से? अगर ये देखो लेट मी चेक कुछ 300 साल पुराना वाला लाइव अकाउंट है ये तो। सॉरी गाइस, सेटअप भी कर रहा हूँ बस। इसके अंदर मुझे करना जो है वो है डेस्कटॉप साइट, जिससे मैं लाइव चैट भी देख पाऊँ। लाइव चैट क्यों नहीं देख पा रहा मैं इधर से? आर यू वेटिंग फॉर येलेना? नो नो नो, ओनली फॉर रिडीम कोड। हमका सिंपल काम है भाई, हमको रिडीम कोड्स चाहिए बस। okay. हमने ये खोल के रखे, सारे खोल के रखे बस, और कुछ नहीं चाहिए। किस पे आएगा? votes are for Yellen, 33% votes are for Shao, and 33% votes are for redeem codes. Hi bro, hey bhai, welcome to the stream. Hey bhai. Let me just check. Add me where? In game? Actually, I'm not playing the game right now. Let's check. ये क्या कर रहा है? Actually, he's my friend. That's right. क्या कर रहे हो भाई? He's just waiting. Please wait. तो हम भी कर रहे हैं। गेम एंड प्लेयर एक साथ करे? ओके, नो प्रॉब्लम। नाच प्लीज। हमारा वाला कहाँ है? हमारा वाला लाइव स्ट्रीम कहाँ है? हमारे देख कौन रहा है? 3 क्या करते हो? मतलब क्या कहते हो? ओके, हाँ कर लेते हैं। चलो बीसी पे आ, बीसी पे आ जा बस। एंड कौन से किसके बीसी पे आना है? का बीसी तो अभी तो देखते हैं। Dear Teenage Me is a Spotify original podcast produced by Yuva Original. Do you know the new game that whoever is making name Zero Cells or no bro? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चलो, कहाँ हो गेमर एक्सप्लेयर भैया? कहाँ है? और मेरा वीसी ज्वाइन कर लो आप, अगर करना है तो। अगर ठीक है, चलो। Just waiting. किसका बोल रहा हूँ? सॉरी, कान के पर्दे फट गए, मुझे भी पता है। अभी तो खाली वेट करना है। सारे लाइक लिटरली 5:30 बजे तक क्या करें?
5:30 बजे। अभी तो रुको, मैं टाइमर लगा देता हूँ। इनके चैट रूम पे भी नहीं है। ओ हेलो गेमर एक्सप्लोर भैया। ओला ओला, क्या हाल है? होल्ड ऑन। तो स्ट्रीम भी थोड़ा ठीक है। अरे नहीं वो डिले है क्योंकि थोड़ा सा डिले है। नहीं अभी थोड़ा सा डिले है क्योंकि वो मेरा नेट चला गया था, इसी वजह से डिले। हाँ मैं चैट बहुत मुश्किल से पढ़ना पड़ेगा यार आज। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा भाई आपने। बड़ी कोई टोटका बताओ, आर्टिफैक्ट अच्छे मिले। एलन 50% लोग चाहते हैं कि एलन हो भाई। एलन 50% लोग चाहते हैं कि एलन है। यलन आएगा यार। तेरे को क्या लगता है यलन कैसा होने वाला है? मेरे को तो मतलब एक्सपेक्टेशन है यलन से। भाई मेरे को थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लाइक वो एक हाइड्रो कैरेक्टर है, बहुत लोग बोल रहे थे। हाइड्रो ही है बेसिकली, हाइड्रो, लेकिन उसका जो डैमेज है ना वो बहुत ही हाई स्केलिंग पे जा रहा है। वो एचपी क्या के बेस पे कैटलिस्ट है क्या वो? नहीं वो यूजर है, वो यूजर है। वो पहली बार भाई। जेंशिन इज लाइक ठीक है, हम भी गंगा पैती गंगा पे हाथ धो लेंगे। चाइल्ड के बाद येलन ही है वो कैरेक्टर। वो का ना कोई सीन ठीक नहीं है, पता है? आई विल स्किप येलन। अरे पता नहीं वो का ना कोई कैरेक्टर सही नहीं है, पता है क्यों? देख गानी उन्होंने बनाया था सपोर्ट टाइप गानी बनाया था, लेकिन निकला था ना पावरफुल डीपीएस, एकदम टॉप 10 डीपीएस निकला था। तो यार येलन का ऑलरेडी वो लोग मतलब काफी हद तक पावरफुल बनाए एक्चुअली। उसका एलिमेंटल स्किल डैमेज वगैरह देगा ना तो काफी हद तक पावरफुल जाता है। अब अगर तो सोच ले, अगर वैसा वाला चीज होगा ना तो बस हो गया। अरे लॉल। अब ऐसे हाँ, यहाँ पर पता है अभी मेरे यहाँ पर चैट पे एक जन कह रहे कि मतलब डूडी कह रहे हैं कि वो येलन स्किप कर देंगे क्योंकि यार वो यूजर है यार, ये मोबाइल प्लेयर्स वालों को प्रॉब्लम होगा यार। हाँ अरे मैं भी भाई, मेरे को जब ये में मिले थे ना, मैं लाइक पेन भाई। एक अच्छी 5 स्टार कैरेक्टर मिली, लेकिन ये क्या है? हम तो मोबाइल यूजर है भाई, हमें ये सब देख के क्या हमें क्या क्यों भाई? लेकिन ये येलन का किट मैंने देखा, जो येलन का किट बहुत ज्यादा डाइवर्स है। वो तेरा वहां से आ जाता है, क्या बोलते हैं उसका जो एलिमेंटल स्किल्स है ना, वहां से बहुत अच्छा डैमेज आ जाता है। हाँ मेरे को काजुहा चाहिए पे लाइक स्ट्रीम होगा ये लास्ट टाइम। YouTube पे भी होगा, Twitch पे भी होगा, लेकिन YouTube पे जापानीज वाले पे पहले होगा। जापानीज वाले पे नहीं, YouTube पे होगा ही, मतलब बाद में होगा। तेरा Twitch पे सबसे पहले आने वाला है। ओके YouTube पे होता है बाद में। बट पिछली बार को तो बिलीबिली में सबसे पहले आ गया था, लेकिन पता नहीं इस बार बिलीबिली में कुछ आया नहीं। बिलीबिली हाँ, बिलीबिली तो चाइनीज का है ना, इसी वजह से। चाइनीज का है ना, ऐसे सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन इस बार मतलब आया ही नहीं। वरना तो ट्विटर में बिलीबिली का भी मतलब वो पोस्ट कर रहे थे। मेरे को काजुहा चाहिए, आया तो है मेरे पास, इसीलिए आई डोंट वांट येलन नाउ। यार आयातो और येलन पूरा अलग है यार, उनका किट। चलो 40% शाओवन येलन है वोट। अरे शाओ नहीं यार, अब यार शाओ फायदा नहीं होता। एक बार मैं अपने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ पता है मैं की बात पोल हाँ पोल की बात कर रहा हूँ। आई गॉट इट। YouTube पे 5:30 बजे तक स्ट्रीम होनी चाहिए। नहीं, YouTube पे 6 बजे से होगा आई थिंक। Twitch पे 5:30 से होगा। नहीं जापानीज वाला खोलो, उधर प्रीमियर पे सेट है, 2K वेटिंग है 14 मिनट पे। जापानीज वाला खोलो, मेरे स्ट्रीम पे देखो। सॉरी अरे नो मुझे तो टीम्स बनानी है अब इसके लिए, तो मेरे पास टीम में येलन के लिए जगह नहीं है अब। टीवीटी जापानीज वाला देखो गाइस, ये तो ऑन है यार। जापानीज वाले में तो कुछ एक सेकंड में तेरा वो देखता हूं। होयो एक सेकंड। ये मैं चैट बंद कर देता हूँ ना, मैं इसकी जगह मैं अपना स्ट्रीम ही खोल लेता हूँ। वो जो जापानीज में है या चाइनीज है वही बोल। मैं वो चाइनीज है। हाँ चाइनीज है वही बोल भाई, आता समझ में नहीं आता, दोनों सेम ही दिखते हैं।
नहीं उसका लेटरिंग थोड़ा अलग तो है। पहले चाइनीज पे आएगा। हाँ चाइनीज मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता सच बता रहा हूँ। हाँ वही ना, सुन के बहुत अच्छा ही नहीं लगेगा। सुनने में बहुत घटिया लगता है। जापानीज वे मस्त लगता है मेरे को। हाँ लेकिन वो भी Chinese है, जापानीज फिर भी ठीक है। जापानीज ऐसा नहीं जापानीज कि फिर भी नहीं है। मतलब जापानीज में क्या है ना, अगर तो डेवलपर का बात नहीं सुनेगा तो बाकी चीजों में जापानीज बड़ा मस्त लगता है। इंग्लिश से बेहतर लगता है मेरे को, ठीक है। लेकिन डेवलपर का बात के समय इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश। वो तो कॉमन सी बात है। वो तो है। चाइनीज वाला पे आ गया। चलो देखते हैं ट्विटर पे तो 5:30 बजे तक अगर आ गया तो ठीक है, फिर हम उस पे देख लेंगे। ट्विच उसके पे आ बाद जाएगा। ट्विच मैं ट्विटर बोल रहा हूँ। वैसे ट्विटर में लिंक दिया हुआ है तो या वहीं से आ जाएंगे लोग। ट्विच मैं ट्विटर बोल रहा हूँ। हाँ मेरा आवाज सॉरी क्या सॉरी क्यों कह रहा है? एल लग गए थे कानों के ना। अरे कोई ना। कितना मिनट बचा है? लेट्स सी। 12 मिनट्स 12 मिनट बचा है। अब मैं रिमाइंडर लगा रहा हूँ इधर। तो इसको लाइट चैट ऑन है ना। 12 मिनट बाद ट्विच पे आ जाएगा। ये भी ओपन होता है दूसरे वाले में काफी। अच्छा कुछ ये जेंशिन का कुछ ये देखे हैं? देख लेते हैं। वैसे तो मैं भी वो देखने वाला था, टू बी ऑनेस्ट। आर्क नाइट का ही वो देखने वाला था। लाइट एंगल अच्छा हाँ देख ले, दिक्कत नहीं यार। अच्छा वैसे यार मैं उसके बारे में बताना भूल गया कि होंकाई स्टार रेल का जो बीटा टेस्ट का वो है, क्या कहते हैं, अरे रिजल्ट तो नहीं, मतलब जो स्टार्ट होगा ना उसका टेस्टिंग, वो तेरा आई थिंक 25 से स्टार्ट होने वाला है। तो यार 25 के पहले सबको यार अपने ईमेल पे मिल जाएगा यार। मेरे को लिटरली अभी तक नहीं आया यार। आई डोंट नो मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं। टुडे आप सिलेक्ट हुए? बड़ी होंकाई हुए क्यों क्रिएट मेल पे मिल जाएगा यार। मेरे को लिटरली हुआ। अरे ठीक है एक सेकंड यार। लॉल भाई होंकाई भाई, मैं होंकाई अभी उतना खेलता नहीं हूँ। मेरा पुराना वाला अकाउंट खो गया है, तो मैं तब तक होंकाई ओपन करता हूँ। बाय द वे गाइस कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं मतलब 2.7 के पहले कुछ देखना ही नहीं चाहता। मैं बोर लग रहा है देखने में। चलो नाच प्लेस की स्ट्रीम पे जाके देखते थे अपन। जल्दी से ये निपटा दें भाई। ये लोग गेम खेल रहे हैं हम तो। हम भी गेम खेल लेते हैं। गेम खेलने के बाद जाके घुसते हैं। अबे यार अपडेट भाई तेरी से अपडेट कितना। अबे तेरी 8 GB का अपडेट गेम खेलने के बाद जाके घुस। सॉरी ड्यूटी आज नहीं होगा यार। 8 GB। अबे यार चलो 50% ELN। आई डोंट थिंक मुझे ईमेल आएगी भी। टीवीटी नेवर लकी। अरे नहीं भाई यार 3000 लोग वेट कर रहे हैं। देख रहे हो 3000, सिर्फ 3000। मतलब चाइनीज में आधे लोगों को चाइनीज में देखना ही नहीं है। चलो एक बार हम क्यों देखें? चाइनीज में मजा नहीं आता। बिल्कुल मजा नहीं आता। बहुत ही बकवास लगता है सुनने में। मतलब फील नहीं आती है बिल्कुल भी। 35 मिनट्स लगेगा मेरा ये डाउनलोड होने में। क्या डाउनलोड कर रहे हो? वो होंकाई आज करते हैं। मैंने होंकाई डाउनलोड किया था फिर डिलीट मार दिया। लॉल आज करते हैं ड्यूटी, ठीक है। आज ये खत्म है, मतलब ये लगा दिया। कुछ और लैंग्वेज पे है, मेरे को इंग्लिश वाले चाहिए। इसमें जापानीज है तो मैं खेल लेता इसमें। वो करते हैं, मतलब ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद। ब्रो बडी फिर धोखा दे दिया। अरे नहीं मैंने कहा ना कि वो स्ट्रीम तो नहीं, मतलब ये जो वॉच पार्टी होगा, वॉच पार्टी के बाद ही हम लोग होंकाई में जाएंगे, ठीक है। आई विल कीप माय प्रॉमिस, डोंट वरी। आई विल कीप माय प्रॉमिस। बिल्कुल छोटा कर देते हैं। बेटा रजिस्ट्रेशन मिल जाए स्टार रेल की ना भी मिले। अच्छा ट्रिपल जेड का ना। हाँ मैं खुद चलो मैं इसके चैट की जगह मैं अपना चैट लगा देता हूँ। चलो गाइस क्या आइडिया किया है ना मैंने। ये देखो मेरा स्ट्रीम देखो। ये देखो मेरा स्ट्रीम देखो बस। अच्छा रुक जाइए एक सेकंड गाइस, इसका जरा यो यूमी चार, वेलकम टू द स्ट्रीम माय मैन। व्हाट्स अप, वेलकम टू द स्ट्रीम।
How are you doing, man? Are you guys ready, DB gang? Please spam DB gang. भाई मैंने आधे मेरे व्यूअर्स लूज कर दिया, कब पता है? जब मेरा नेट चला गया। I got it. लेकिन तेरे व्यूअर्स काफी जल्दी आ जाते हैं भाई। Yo Yumi-chan, konnichiwa. What's up? ये सम भैया आजकल नहीं आ रहे हैं, पता है? अरे उसका एग्जाम चल रहा है, उसने कल के लाइव चैट में कहा था। वो मुझे भी कहा था। Well, I'm a girl, not a man. Oh my god, okay. यार, konnichiwa, this is for you, Yumi-chan. This is for you. क्या मेरी आवाज आ रही है मैं चिप्स खाते हुए? Yes, आपकी आवाज आ रही है यार। इतना मेरे को भूख लग रहा है यार, इतना मत करो यार, इतना मुझे बहुत भूख लग रहा है। By the way, Yumi-chan, are you Sorry. do you know Hindi? I mean, do you know Hindi or you are comfortable in English? I wanna know because your name is kinda, you know, foreign type. That's why. Five minutes, guys. Yo, anime boy, what's up, my man? Welcome to the stream, my man. Yep, अरे यार I मैं know अपना Hindi. चैट कैसे देखूंगा अब? भाई तो दिक्कत किधर है यार? तेरे को हिंदी आती है तो मैं इतना ज्यादा दिक्कत क्यों ले रहा? तो फिर भाई साहब नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बोला कि मैं चैट कैसे देखूं अब? इंग्लिश। मैं जैसे ही मेरा फुल स्क्रीन कर दूंगा तब चैट नहीं देख पाऊंगा। 1 घंटे का तो चलेगा ही ना। तू अपना वो कर ले, क्रीम। नहीं, मेरा फोन मेरे रिलेटिव से ले लिया। क्या बोल रहा? जरा चिप्स पास कर। मैं खाने का। ये लो स्ट्रीम खोलो मेरा। ये लो चिप्स लो। एक सेकंड। तू क्या फेस्टिवल कर रहा है क्या? ये लो चिप्स लो। इतने चिप्स है। ये लो चिप्स। जो भी लेना है सब ले लो। इधर से जितने भी चिप्स लो, जितना भी चिप्स लेना ले लो। गाइस ले लो। Visual character is nice. Thank you, man. This is the video. चिप्स ले लो। अरे भाई क्या डिटेलिंग पे फोटो है। ये देखो चिप्स ले लो गाइस। तू चिप्स से ज्यादा हमें ना ज्यादा मतलब वो भूखा छोड़ रहा है, सच बता। क्या? तू हमें चिप्स से ज्यादा भूखा छोड़ रहा है। सच में। मतलब ये मैं भूखा छोड़ रहा है ज्यादा चिप्स से ज्यादा। मैं दरिंदा हूँ, मैं सबको खा जाता हूँ। सच में। मैं दरिंदा मतलब कोनिचिवा कौन है? अरे अच्छा एनीमे बॉय कोनिचिवा सारा धोखेबाज। ये चिप्स चाहिए आप लोगों को? अच्छा मैं एक चीज कर सकता हूँ, ठीक है आपके लिए। करूँ क्या? एक सेकंड एक्सक्लूसिव है वैसे। क्या? ये 38% शाओ भाई। शाओ और येलन इज लाइक हम छोड़ेंगे नहीं। फेस कैम की बात कर रहा था मैं। क्या कहते हो? नहीं छोड़ रहे यार। अरे भाई फिर तो मेरे को स्ट्रीम बंद करके आपका स्ट्रीम पहले देखना पड़ेगा। फेस कैम करने वाले हैं। मैं चिप्स का पैकेट नहीं मतलब फेस कैम ऑन करके चिप्स का पैकेट दिखा दो, क्योंकि मेरे पास असली में चिप्स का पैकेट है एक्चुअली में। वो मैंने रख ही दिया है कि वॉच पार्टी में मस्त तरीके से एकदम एक कोक के साथ होगा मस्त वाला। बाय द वे यो फिर से कोनिचिवा। इसको बोलता है ना लड़की माइनक्राफ्ट में आ जा, तू लाइव स्ट्रीम हो रही है उनकी लड़की क्या? गाइस मेरा वो ने में फेस कैम लॉल। अरे मैं मतलब नहीं फेस कैम में अपना फेस नहीं दिखाता ऑफ कोर्स, लेकिन फेस कैम वो दिखाता आपको चिप्स का पैकेट माइनक्राफ्ट में आ जा, तू लाइव स्ट्रीम हो रही कैम। अच्छा बाय द वे यार 19 मिनट में मेरा होम का अपडेट हो जाएगा, ठीक है? ऑफ कोर्स हम लोग लाइव स्ट्रीम देखने के बाद होम का में जाएंगे। लाइव स्ट्रीम हो रही है उनकी लड़की। अरे नहीं हम वॉच पार्टी कर रहे हैं। ये एक हम जेंशिन का है ना, हमारा मेन कंटेंट तो जेंशिन ही है, उनका मेन कंटेंट माइनक्राफ्ट है। मेरा मेन कंटेंट माइनक्राफ्ट नहीं है, गलत कह रहा है तू। मेरा मेन कंटेंट मैं तन्ना भैया की बात कर रहा हूँ। ओ लॉल। लड़की फेस कैम ठीक कुछ देखना है, ठीक? बाय द वे कुछ देखना है। You don't have viewers। हाँ भाई यार viewers नहीं आते। बदतमीज हो रहे हो। ये लो चिप्स खाओ।
सबको मेरी तरफ से चिप्स, चलो चिप्स खाओ। व्यूअर्स नहीं आते ना। होल्ड ऑन। बट एक चीज अच्छा लगता है यार, एक दो बंदे आ जाते हैं, इनका मेन कंटेंट ही नहीं है। क्या? मेरी बात कह रहे। अरे मैं चैट में कह रहे कि मेरा मेन कंटेंट ही नहीं एक्चुअली, जो कि सच बात है। रुको मैं ये चैट बंद कर देता हूँ। एक्चुअली नहीं, ये चैट क्यों बंद कर रहा हूँ मैं? यस आई एम हियर। ओ भाई थैंक यू यार। भाई 2-3 बंदे आ जाते हैं ना तो बस मैं वही ना, खुश हो जाता हूँ। लेकिन मेरे एक बंदे आए हैं, वो भी भाई तो एक बंदा आया ना बस खुश हो जा यार, एक बंदा काफी है, सच बता रहा हूँ। उनको टेंशन पसंद ही नहीं है। माई पावर मेरी क्लास से कहा मैं उसको किसी को भी मार देगी। स्टार्ट अपलोडिंग। आपका समझ में नहीं आया। ओला नहीं छोला, क्या बोल रहा देखो। अरे नहीं मेन प्रीमियर विल बिगिन शॉर्टली। चलो गाइस अब मजा आएगा। हो रहा है। ए प्रीमियम हो रहा है। हाँ, हो रहा है। एक सेकंड रुको मैं रिफ्रेश मारता हूँ। मैं भी रिफ्रेश मार रहा हूँ। अभी तक कुछ आया तो नहीं है, एक सेकंड फिर से रिफ्रेश मारता हूँ। We are all here. Yo, let's go my man. Yes guys. चिप्स बाद में खाओ। और मेरे को लिंक देखो डिस्कॉर्ड में। आओ चाओ ये किसका आ रहा है? Hold on. लाइव दिखा रहा है। पहुंच गए। जेंशिन का ये हो रहा है और ट्विच पे भी हो रहा है। हाँ हो रहा है। एक्चुअली में हो रहा है। रुको ट्विच का मुझे दिख नहीं रहा है। अभी वक्त है इसको बंद करने का। Yeah, I'm already super excited and I'm sure everyone else is too. So let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7, Hidden Dreams in the Depths. Roll tape! Yes guys, chalo. Arey bhai, Yo boys, 77,000 viewers. My father, well, don't play he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough. She kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Shao can't sense our presence here? Wait. Something seems to have been activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Ooh, Yelan, bye. Gotcha! Busted! Here comes the catch. Maybe I should make better use of my time. Our bond is strong. Stand with me. Lightning, purify! No, it's still alive. Why would you become like this? ये मैंने नहीं किया। Like Shao! Could he be in trouble? No way! Was that who I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! Oh, bye Lumin का I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me.
guys, redeem करो इसको. अब मुझे भी करना है क्या? मेरा की चाहिए. हेलो बाओखांग, वेलकम टू द स्ट्रीम. कैसे हो? सॉरी ब्रो, मैं देख नहीं रहा था इस वजह से. सॉरी बाओखांग. सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली देख नहीं रहा था. मैं एक्चुअली उसके अंदर डूबा हुआ था ना, इस वजह से. Ooh, how dramatic was that? Yeah, for real. Wow. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Yeah. Hint by And hint it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's waiting to see all these new characters and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. In the early part of version 2.7, our new playable character, Yelan, will be appearing in her own event wish. At the same time, our old buddy Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. In the later part of version 2.7, Arataki Ito, that's me, will be making a return alongside his deputy leader, Kuki Shinobu, in his own event wish. Ah, Kuki भाई लूमीन का स्टोरी आने वाला है. She can do anything. मतलब वो कैरेक्टर का Also, in मेन terms स्टोरी है. of weapons, travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version 2.7. Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape! Let's go. Character preview है भाई. This development is not really अलग होगा थोड़ा सा. ओपी भाई येलन की अच्छी है भाई. येलन अच्छी है. देख के तो लग रहा है अच्छी है. Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back, I'll scratch mysterious yours. person who claimed for the Ministry of Civil Affairs. Oh, तो ये लीवर से ही है. चलो guys, ये लीवर से है. Whoa, I like that लीवर से dice इतना move. अच्छे I लोग really like how कैसे she आते हैं. turns invisible. It's like my favorite part. Yeah, I love how swift her movements are. Like, ooh. And that dash? Yeah, Oh, super cool. Totally. That's dope. And what a silky smooth voice! Aw, shucks. So Yelan many of you sub- may sub already DPS, recognize yes. Yelan from when she appeared चलो in the येलन chasm. 44% Her से archery जीत रही. skills Sorry, are sorry. pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Sorry guys, आज मैं actually Of course. दूसरा phone use कर रहा हूँ. इसमें Yelan chat is ठीक the से नहीं देख पा रहा. mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Definitely not the first mysterious tea house owner we've met. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Teyvat. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to guide the course of events, and then, poof, disappear before anyone's noticed. Her activities have taken her across the other nations of Teyvat, and even to the Abyss. All right, nice. So she also travels around Teyvat, like the Traveler. Well, yeah, भाई but blush कर रहा है. maybe a little more dangerous looking than our traveler. Hey, the Traveler can be dangerous. Well, Sure then. Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting.
If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's duties. So in other words, Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't put it quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang isn't about rank, it's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list, and that she's been keeping a close eye on them. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios and works to uncover the truth, then be sure to check out her story quest, Umbrabilis Orcus Chapter, dropping in version 2.7. Sweet! Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it! Yelan wields a bow and manipulates a Hydro Vision, and in combat, she's a Hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. She's an expert at weaving in and out of dangerous situations by swiftly moving across the battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough barb that will deal AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Lingering Lifeline. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. When her rapid move ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state based on the number of opponents marked. Ooh, cool. So we'd better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Mm-hmm. Her elemental burst, Depth Clarion Dice, deals AoE hydro damage and creates wondrous dice, which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role, too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, even after sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, Kuki Shinobu. Oh, she's the pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. So let's see her in action. Second Ito मतलब? Oh हाँ. Second Ito नाम देना अच्छा नहीं था. दीदी मास्क लगाए घूमती है. दीदी के एक्शन मूव्स अच्छे हैं लेकिन नॉट श्योर कितने लाइक फोर स्टार है क्या? इलेक्ट्रो है पक्का देख के वो तो सबको ही पता है. Just
let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Oh, Wow. That's a spicy trailer. So cool. Yeah. I love the way she looks, like her color scheme and, of course, the green hair That's a and the spicy mask. trailer. Like, she looks super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. I love Yeah, that band like karo. lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. All right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous situations. With her help, the little wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of commission. Oh, I think I see who's really Yelan running things in the Yelan gang. expression So the देखो real just question here is why would someone as competent as Shinobu देख के ever बोल सकती choose है to भाई join इन the लोगों से Arataki gang? Well, what are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. No, I'm not exactly sure, but, let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah, is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills, and it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Yeah, but Shinobu's had the chance to meet many people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryo Commission. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, that. For some reason. Guys sound so excited. It's great. Okay, moving No on. one knows why. Moving on. All right, if you're interested in learning more about Kuki Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, how exciting is that, but you'll also get to learn a lot more about Shinobu's past. And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Woo. Kuki Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Aww, It's valiant. that's so sweet of her. It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skill Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. So, travelers will need to monitor her HP when using her skill. You don't want it to be too low, but at the same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Narukami भाई Kari on थोड़ा the सा right, ये है creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it.
And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Mystery. Yeah, the group will also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to survive together in what will definitely be a thrilling experience. So from what's been revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. As travelers play through the Archon quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also gradually become available. Travelers will need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Interesting. So it looks like travelers will need to be prepared to face a variety of scenarios. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point. I know I gotta level up a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in battle. Travelers may consume stratagem shards they've collected in battle to redraw stratagems, or select a previously equipped stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters. Yeah, and in addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should remember to also collect rewards from the challenge quests on the event page. The rewards will include an event-exclusive 4-star bow called Fading Twilight. Ooh, fancy. Sounds cool. So you guys have got to check out this event. Oh, I definitely will. All right, our next event is called A Muddy Bazaar Adventure. This one also takes place down in the chasm. Darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Creepy. Yeah. With the help of Persina's spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Attacks from monsters will disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice. As the event progresses through different phases, uses for the spike will also change. For example, the spike could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Keep yourself alive. Yeah. I'm up. So you guys remember how I said that Shinobu studied law in Liyue before?
Well, to celebrate her graduation, we're holding a special event. The almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival, which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous music games. This time, travelers will be receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. All right, here we go. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use 2 hands. All right. I mean, some people do them one-handed, but I can't imagine doing that personally. Yeah, it's tough for me. We're seeing a lot of single notes. Yep, we got the taps and we got the holds. You got tippy taps and holds, and then we have the double notes too. You have to hold them down at the same time. Nice, multitasking. I'm really loving this. At least कुछ तो talent है. Shao, चलो Shao, the 42% लोग Shao को चाहते हैं. This music is bopping. I know, right? That's what all the kids say. Bopping. What's bopping? Oh, tough, complicated. I think they missed one. Oh, they missed one. No. No. Combo Look at breaker. that combo. Double notes. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. I'm into this. ये लोग कर क्या रहे हैं? म्यूजिक के साथ जाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर-उधर हो रहा है. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be playing the rhythm game on a variety of different devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented pf, and can adjust the decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. In this music game, travelers will have access to all 3 difficulties from the very beginning. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still be able to collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh. As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes with others, you will first be required to play the song and reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create a robot. Bet nobody saw that one coming. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total of 3 processes you must complete. Number 1, source material collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity Pot. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a special furnishing that can perform all 3 animations.
Oh, nice. During the event, travelers will be able to claim a total of 4 robots from test model vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can use the trade function to send requests and obtain the product model that you need. So, who's excited to make some robots? I am! Yeah, I can't wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the new events in version 2.7. Next, we have some important system updates and optimizations coming to the game. First, to help travelers on their adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the Character Talents menu, they can use the newly added Talent Reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. And by pressing the Attribute Reference button in the Character Artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. The system designers wish to give everyone more intuitive data to reference while choosing how to strengthen each of your characters. Ooh, cool. So, yeah. That'll make it easier. The talent reference button looks super convenient. Like, it seems like it would be really helpful if you're kind of on the fence and you don't know what you want to pick. You can see what everybody else has, like, done in the past. Oh, totally. Anyways, we also have another update regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith's Watch, which includes all the music composed by the Hoyo Mix team for the new Chasm area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new collaboration to announce to everyone. Genshin Impact will be teaming up with the Funko brand to release a series of Genshin Impact Funko Pops. Whoa! Yeah. The first wave will feature figurines of Paimon, Ether, the one I voice, and Lumine. These will be released as Funko Pop Asia bobblehead figures. Travelers who are interested can head to the official Funko website to be notified when the figures are released. Although you have to wait for the figures, you won't have to wait for the next redemption code. Chalo guys, redemption code. Redeem कर लो. इससे हमें 100 प्रीमोजम शॉट मिलता है. मैं नहीं करता भाई ये सब. मैं नहीं करता. मेरे को नहीं चाहिए. बहुत टफ होता है ये सब मिलना. उसके लिए आपको सेटअप करके रखना पड़ता है. लाइक अपने फोन पे माइनक्राफ्ट खोल जेंशिन खोल के रखना और रिडीम वाला ऑप्शन खोल के रखना. और जैसे ही लाइक लैपटॉप या फिर कोई सेकंड स्क्रीन आपके पास होना ही चाहिए. उसके लिए मैं नहीं करता उतना. मेरे पास सेकंड स्क्रीन नहीं है अभी तो. जिंदगी है. कल छुट्टी थी तो इस वजह से मेरे पास फोन था अपना. लेकिन कल हम नॉर्मल जेंशिन स्ट्रीम कर रहे थे. आज स्पेशल इवेंट है लेकिन आज मेरे पास अपना फोन नहीं है. मेरे रिलेटिव देख रहे हैं मेरा फोन. Wow, are we seriously at the end already? For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content today. Definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction. So that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game. Rhythm game. Yes. And building a robot. I'm excited for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody, and we'll see y'all next time. Thanks, everyone. Bye. Bye, guys. Bye. मैं इनको बाई क्यों बोल रहा मालूम नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा था. प्रोग्राम अच्छा था.
भाई साहब प्रोग्राम बहुत ओपी था भाई, बहुत ओपी था, बोलने के लिए बहुत ही ओपी, बहुत ही लाइक कुछ विजुअल्स दी क्लैशेस ऑफिशियल भैया आपने लाइक एक अच्छा वाला ये मिस कर दिया, स्ट्रीम पीछे करके देख लेना, एक बहुत अच्छा वाला जगह मिस कर दिया आपने, बस वही है। होल्ड ऑन, ये क्या है? ओए इन्होंने स्ट्रीम ही बंद कर दी। ओह क्या मालूम क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रीम ही बंद कर दी। ओह सॉरी। तो गाइस लाइक अभी करना क्या है, जेंशिन खेले या फिर लाइक स्ट्रीम एंड कर दे कि और कोई और गेम खेले, कौन सा बताओ। मैं सच्ची में बहुत ओपी था आज। लास्ट में जो विजुअल्स आए थे ना वही ओपी थे। एक सेकंड रुको, तो मैं जेंशिन ऑफिशियल पे अपलोड कर देंगे, वो लाइक ट्रेलर जो है ना उसका वो अपलोड कर देंगे, जेंशिन इम्पैक्ट ऑफिशियल। ये आज ही अपलोड कर देंगे इस चैनल पे, बस सिंपल। क्या करेगा इस बोल लो, स्ट्रीम एंड कर दे, करे कुछ सजेशंस तो दो गाइस। ये अभी भी स्ट्रीम कर रहा है, हाँ लेट्स चेक। यहाँ पे हो। मैंने इनको लाइक नहीं किया, ठीक है। क्या बोलो गाइस, कर दे एंड, पहले पोल एंड कर दे, उस समय दिख तो जाए। बोलो गाइस, लेट्स चेक नाउ। अरे देखते हैं इधर कौन कौन क्या क्या कर रहा है। इधर जाके हम करेंगे एक्सप्लोर, इधर गेमिंग एंड इधर से जाके अब हम जेंशिन करेंगे। जेंशिन सबसे टॉप पे है स्पेशल प्रोग्राम की वजह से, देख रहे हो लिटरली भाई मौका, सब बड़े बड़े स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहे हैं। ये देखो भाई, बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे भाई कितने बड़े बड़े स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहे हैं। भाई बहुत बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, हमारा स्ट्रीम तो बिल्कुल नीचे होगा, बिल्कुल ही नीचे, बहुत नीचे होगा भाई, सच्ची में बहुत स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहे हैं अभी। गाइस 2 लोग देख रहा, बोल दो ना कि करना है एंड कि नहीं, कि करना है, इसको बढ़ा देता हूँ मैं। अरे चलो ठीक है, एंड कर देते चलो, है ना। बाय बाय गाइस, वॉच पार्टी देख के बहुत मजा आ गया। चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए सॉरी नेक्स्ट स्ट्रीम के साथ जो होगी रात को, है ना, रात को होगी वो वाली स्ट्रीम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड सायोनारा।